लाइव शो नहीं हो रहा है। इज इट लाइव? ओके, वी आर लाइव। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वाला लाइव मेरा डिस्टर्ब हो गया था बिकॉज ऑफ लास्ट वाला लाइव ख़राब हो गया था बिकॉज वाईफाई का कुछ इशू हो गया। सो आई एम हेयर 1 घंटे पहले। 6 बजे से 10 बजे तक का सेशन करेंगे और मतलब ऐसा प्लान है अभी कि 4 घंटे का सेशन करने वाले हैं, बट अब देखो बीच में फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हाय हुजर, इतना येलो येलो सा क्यों लग रहा है? बहुत ज़्यादा येलो नहीं लग रहा है? आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा सा येलो लग रहा है। कंप्लीटली येलो लग रहा है। बेटर। अपन क्या कर रहे थे? बायो कर रहे थे। Make a separate drive for these chapters after. Okay. प्रीवियस क्वेश्चन हो गया था बट चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सेव हुआ या नहीं हुआ पता नहीं। नहीं हुआ, लास्ट एडिट सेव नहीं हुआ। लास्ट एडिट सेव नहीं हुआ यार। बीस तक वाला हो गया। बीस नहीं हुआ, क्यों हो रहा है ऐसे?
क्या हो रहा है? पूरा टाइम मेरा पीरियड के सर ही चला जाएगा। 1 हो गया, अच्छा नहीं हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 7 हो गया है, 8 हो गया है, 9 हो गया है, 10 भी हो गया है, 11 भी हो गया है आई गेस, 12 भी हो गया है, 13 भी हो गया है, 14 को कहाँ जल्दी कर दो, बस 14 है, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 17 17 नहीं हुआ, अच्छा 17 में चेंज नहीं हो रहा, 16 इज देयर, 17 हो गया आई गेस, नहीं नेगेटिव, ओके ओके ठीक है। 18 का क्या करना है? 9 trainers, roll off 10 20s, 20 में embryo, ठीक है। 21 हो गया, 22 हो गया है, 23 भी हो गया है, 23 का क्या प्रॉब्लम, क्या क्वेश्चन है? 23 के एडिट्स नहीं हुए मेरे ख्याल से, नहीं 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 नहीं, राइट सेक्शन 21 में कोई एडिट है? 21 के भी एडिट्स नहीं हुए, 20 तक हो गया ना, 20 तक हो गया है, 21 के एडिट्स नहीं हुए, ठीक है। ओके स्टार्ट फ्रॉम देयर, 21 के एडिट्स का क्या करें? 22 के एडिट्स का देखो, ओके नेक्स्ट इज 20, ये तो हो गया था, 24 का हो गया, ये तो पता था ना शायद, 24 हटा दो, 24 पता है ये चेंज, 25 का देखो जल्दी से, 25 बी प्लांट वाला, ओके नाउ 26 नहीं था ना माउंट, ये हो गया था, और ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस वन एप्पल वाला था, और सारा हो गया। नेक्स्ट पेज नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, 7 turmeric is a stem,
टर्मरिक इज अ अंडरग्राउंड स्टेम। ये रह गया था। और क्या है नेक्स्ट इज एस्पिरिन इज एंटीपायरेटिक, लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री ये वाला रह गया था। एंड मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख यही है कि मेरे पीडीएफ एडिट्स उड़ जाते हैं। Okay, next is mummy. Fungal infection. Okay. तेरे हो के रहेंगे। ये हो गया फीमेल वाला। ये हो गया। Question number 2. Question number 9. Okay. पेज नंबर 34। 34 निकालो जल्दी, सारे ब्लैक वाले वाले। दिस वन, दिस वन, दिस वन। इसको ऐड करना है डॉक्स में। ऐड इन डॉक्स। ओके, नेक्स्ट इज तेरे हो के रहेंगे दिल जब तेरे हो के रहेंगे तेरा साथ चढ़ा है। कहा गया क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 10, 19, 17। फाइनली हो गया। अब इस पीडीएफ को सेव करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये पीडीएफ सेव हो जाए और मेरे एडिट्स गायब ना हो। ओम नमः शिवाय। अब ओपन करके देखते हैं। पता नहीं क्या हो। खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा जल्दी। अभी तो सेशन स्टार्ट ही हो। Should I put it here like week?
सेव हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं, ये हो गया, फाइनल करते हैं जल्दी से रिवाइज, फटाफट से करो। कहाँ गया भाई? मेजरमेंट इसमें नहीं है, पता है पता है, चलो ये हो गया, फन हो गया, ग्रीन एल्गी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज enzymes which does not have enzymes, सारे में नहीं है। नेक्स्ट इज ये फॉल्स होगा, आई मीन ए होगा इसका आंसर। इसमें इकॉनमी होगा, एपिथेलियल लंग्स वाले में होता है तो ये गलत होगा। पॉलीसेकेराइड्स ग्लाइकोजन स्टोर होगा, ये पॉलीसेकेराइड्स वॉट एवर द नंबर तिथ वाला डेवलप्ड 20 में होगा। Nerves arise from the spinal cord is 31 pairs. Okay, so the answer is 31 pairs और 31 फुट में हमारे बोन्स है। ओके, द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज 28। लेग बोन पता है सॉलिड होगा, 20 इसमें वही होगा, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस इज फ्रंट फ्लैटेंड टिथ, so the answer is option number C. Option number C. Okay. Now next is which of the following connects with tendon? Tendon. Option number C. Okay. The type of joint found at the shoulder is ये B होगा इसका, ये हो जाएगा 17 का B, 17 B I'm sure. Okay. चलो नेक्स्ट है which organ of the body is affected by typhoid fever? तो intestine, हाँ इंटेस्टाइन होगा इसका। नेक्स्ट इज ये तो हो गया था टाइफाइड वाला, टाइफाइड इज इंटेस्टाइन, cholera is intestine, TB is lungs, and tetanus is nervous system. Tetanus is nervous system, and yes, diphtheria is trachea. Okay. Next, the source of enzymes lipase is pancreas. So the answer is B. Okay. Next. Okay. ये विटामिन वाला याद करना है अभी, B12 होगा इसका आंसर। ये रेटिनॉल इज जीरोप्लिथेमिया। आई थिंक विटामिन का जो नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो याद करना होगा अभी। लीवर स्टोर्स ECD के ABD के सारे करते हैं ना। इंसुलिन इज अ प्रोटीन। Okay, next. The sweetest sugar is fructose. Richest source of vitamin C, आमला होगा इसमें। During expiration, dome shaped, so answer should be B. Okay. Now fat soluble, water soluble है B and C, fat soluble है ADEK. ओके, जो भी बायो वाले देख रहे हैं वो प्लीज़ नहीं हंसें, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज़ है, मतलब GS वालों के लिए। Yeast is used in production of alcohol. Okay. Now pneumonia is infection of lungs. So 6 का D हो जाएगा। During normal respiration ये हो जाएगा B. Okay. Now leukemia, white blood cells. In which organ of the human body are lymphocytes formed? कोई बायो वाला हंसेगा नहीं प्लीज़। दिस इज स्प्लीन एंड बोन मैरो। स्प्लीन और बोन मैरो, कौन आंसर देने वाला है? ओके, lacteals are associated with which of the following? It is fat absorption. Which one of the following glands is present in pairs? Adrenal. Okay, आंसर शुड बी adrenal ही होगा इसका। पैनक्रियास तो एक ऊपर रहता है उसके, ठीक है। Which one of the following is not an antibiotic? ये क्वेश्चन तो बहुत, इसको काट दो यहाँ से। ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन, नॉट
एंटीबायोटिक, ओके। वैसे तो फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले अ रोल इन, ये हो जाएगा इसमें ऑक्सीटोसिन। सो द आंसर इज डी। आई थिंक हम बायो वाले रुके हुए हैं। वैसे द फॉलोइंग इज एनहांसमेंट ऑफ इनेट सिस्टम। इसका आंसर तो मेरे को नहीं पता है। आई थिंक ए। आई थिंक बट आई एम नॉट श्योर। गलत हो गया मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनहांसमेंट ऑफ इनेट सिस्टम, व्हाट इज दिस? इसको देखना पड़ेगा। आई डोंट नो। क्वेश्चन बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। सो आंसर इज बी। जल्दी कर भाई, जल्दी कर, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। कहाँ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स कंट्रोल बॉडी बैलेंस? इसमें हो जाएगा डी। ये हो गया डी। फर्टिलाइजेशन ऑकर इन ओविडक्ट, सो द आंसर इज बी। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ component of chlorophyll? कैल्शियम। कैल्शियम इज नॉट अ component of chlorophyll। 6 का ए हो जाएगा। Very good, very good, very good. Plants appear to bend towards light due to auxins. Auxins? Auxins to suit tip. So answer should be A. Let's see. Answer is A. Oh, गलत हो गया. Diffusion of auxins towards shady side of suit. गड़बड़ 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 गड़बड़. Circle कर. Actual site of dark reaction in photosynthesis inside cytoplasms. This is stroma. 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 हाँ सही है. इसका होगा सी. सी. और लाइट रिएक्शन के लिए ग्रेना. कौन बायो वाला है यहाँ पे? ग्रेना ही होगा. लाइट के लिए ग्रेना होगा. ये हो गया. चलो. Water passes from soil into the root by physical process called osmosis. Osmosis. Now next is which metal ion is found in chlorophyll? Metal ion found in chlorophyll is magnesium. Not sure about this. Magnesium सही था, but I was not sure about this. Circle. The branch of botany related to study of photosynthesis. Plant physiology. ठीक है. The ones who discovered photoperiodism. No idea. No idea, then get idea. A plant bud is embryonic shoot. Okay. Which of the following is a plant hormone? तीनों होगा, पता नहीं इसका आंसर ए क्यों है, बट आंसर तीनों होना चाहिए. इधर तो हो चुका सारा. प्लांट ऑफ फॉर्म लाइक पेरेंट, ये तो हो गया था शायद. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन टर्म ऑफ इट्स लाइफ, ये हो चुका है. सो वी कैन. पी प्लांट इज अ हर्ब. Pea plant is a herb. Okay. The stomata open or close due to the change in position of nucleus in cell, protein composition of cell, amount of water in cell. The stomata opens or close due to the change in what? Water in the cell. Amount of water in the cell. No, I'm not sure. बैक कैसे हो गया? फिर से बैक हो गया. खुल जा खुल जा खुल जा.
अभी ओपन नहीं होगा। यही गड़बड़ है यहाँ, पीडीएफ से पढ़ने का यही नुकसान है। प्लीज़ खुल जाओ, ये नहीं होने वाला आज। तब तक हम बुक से पढ़ लेते हैं। अरे भाई ओपन हो जा, क्या प्रॉब्लम है? कहाँ थे? जेनेटिक वाले पे तो नहीं। 428। इसमें तो मार्क नहीं है, कैसे पता कौन करना है? ये पक्का सेव नहीं हुआ है, तभी नहीं खुल रहा है। डाउनलोड वॉज कैंसल्ड। आई थिंक ये सेव नहीं हुआ होगा फिर से। सेव हुआ नहीं हुआ? हो गया। खुल जा सिम सिम। हो गया। कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे? ये हो गया था। विच मेटल आयन फाउंड, मैग्नीशियम वाला था ना? हाँ चलो ये हो गया था। आगे ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। नहीं ये नहीं हुआ था। चलो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, ठीक है। इसके बाद वाटर रिचेज, ये तो हो गया। वाटर pollinated flowers have pollen grains that are light and smooth. So answer is A. Okay, next. Water enters from the soil into the root hairs due to osmotic pressure. 26C. Next is what? What is the movement of leaves of sensitive part? This is D. Among the following, what is not a true fruit? Apple is not a true fruit. जो भी सुन रहा है ये सुन ले। Apple is not a true fruit. Okay. Now pine, फिर cedar, ये सब क्या है? All of this belongs to gymnosperms. What is gymnosperms? जिसमें सीड्स इनक्लोज नहीं होते। ठीक है, आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ टर्मरिक? टर्मरिक पाउडर इज obtained from, दिस इज डी। आंसर होगा डी इसका, because it's a dried, I mean underground stem. Aspirin is antibiotic. The longest living tree is, I don't know.
विच ऑफ द फूड ग्रेन, ये तो हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। फीमेल एंटीलोप, ये हो जाएगा इसका आंसर। एट द राइट एंगल टू द सर्फेस ऑफ एट एंगल विद, ये बी हो जाएगा इसका आंसर। बी 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 ट्रू। Storehouse of malarial parasite in our body is storehouse of malarial parasite in our body है malarial parasite in our body is liver. Strange, I don't know this. एक मिनट, ये किस भाषा में आ रहे हैं चैट्स? कहाँ पहुँच गई है मेरी लाइव? सॉरी। ये हाय जानवी और हाय someone who is writing in different language. I don't know that language. Please type in English. क्योंकि हिंदी के बाद बस एक ही भाषा आती। Hi Janvi, good to see you. Who is there? Female. Please type English language, because only language I know other than Hindi is English. So please type in that language. Okay, now storehouse of malarial parasite in our body is liver. This is a strange question. Which one of the following is used in the treatment of blood cancer? It is phosphorus 32 and cobalt 60. तो ये हो गया। तेरे होके रहेंगे ला 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 ला। Okay. Which of the following can cause cancer as well as cure? Ionized radiation, ठीक है। ये trachoma disease is related to, it is related to eye. Hi, who is there? Hello, I'm unable to read your text, so please write in English language. Related to eye. Trachoma is related to eye. Okay. No. Consider ये हो गया। Denisha is an intestine caused by 3. ये हो गया। Animal clones are created by the practice of animal biotechnology. Answer is biotechnology. C. Okay, next is how do vector vaccine work to provide immunity? तो by placing the virus in C होगा इसका आंसर यार। चलो दूसरा बता दो जल्दी से। दिस इज प्लाज्मा थेरेपी। Which of the following can be used for biological control of mosquitoes? Gambusia. What is this? Angora wool is extracted from rabbit. A nail is nailed. It will remain at the same position. I wish यहाँ कोई होता और मैं उसे ये फैक्ट बताती, but that's okay. Nobel Prize developing by Arvid Carlson. Okay. Avahan, the Indian segment of Bill and my, it is for HIV. It's the normal human body temperature. ये तो सबको पता है।
36.9. Okay, now when the antigen are introduced in the body to deter by both B and T cells, नहीं B cells होगा बस. When antigens are introduced in the body through vaccination, antibodies are produced to fight of infection by only B cells. B is B cells, okay. अरे क्या हो गया? हाँ. When we eat the meat of goat तो देखो कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो गोट, तो वो भी सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोरस जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए, तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट इज वेयर इज द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मेड फ्रॉम सिप. Lichens are sensitive to which air pollutants? This is the answer was sulfurizer. Very good, very nice, excellent, it's star. I just love it. Okay, next. जल्दी जल्दी जो गोला है उसको पूरा करते हैं. गोला कहाँ गया? यहाँ है. Chlorophyll is mentioned. This is we don't need this. Actually ये क्वेश्चन अजीब सा है, तो ये कभी नहीं आने वाला. वेरी गुड, वेरी नाइस. और उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Cedar. Sequoia. I don't know. What is this? Next. Store of similarity parasite is liver. And the next question is this. ट्रैकोमा डिजीज आइस के लिए होता है, आइस में होता है, के लिए नहीं. और द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा हो गया. चलो, तो ये क्वेश्चन वाला कंप्लीट हो गया है हमारा. अब इसको कल रिवाइज कर लेंगे और दैट्स इट. अब क्या करना है? अब लूसेंट वाला पीडीएफ करना है. वेरी नाइस, वेरी गुड, एक्सलेंट. चल के तुझे हम लेके चले ऐसे गगन के तले, जहाँ कम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार. चलो अब करते हैं नेक्स्ट बीपीएससी वाला लूसेंट. लूसेंट तो मेरे पास था, कहाँ चला गया? प्रिपेयर एज पर PYQ's डिमांड, मेक सेपरेट ड्राइव PDF फॉर दिस चैप्टर्स. Lucent science seminars? I'm not sure about this kind. I think इसमें बुक मतलब डिवाइस में. चल के तुम्हें हम लेके चले कैसे गगन. साइंस हो चुका है, नहीं हुआ है. ज्योग्राफी है, बायो तो बहुत बाद में, 511. $511. Where are you? It 511 का नहीं है, इसमें एडिट नहीं है. नहीं है तो कहाँ है फिर?
यहाँ तो एडिट नहीं दे रहा, लूसेंट का तो नहीं है अभी। एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड में क्या है जरा दिखाओ। एक्सट्रैक्टेड खुल नहीं रहा। जी की ये तो देख चुके हैं, इस पर देखते हैं। ये भी तो ज्योग्राफी वाला है बस, तो बायो वाला का तो है, ये भी ज्योग्राफी वाला है। नहीं है, बायो वाला है ही नहीं। क्या करें अब, क्या करूं मैं क्या करूं, ये कैसे मुश्किल आई, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। नहीं मिल रहा तो कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। मे भी इस वाले में होगा और कहाँ होगा। बायो है तो है यहाँ, नहीं मिल रहा। बिहार है, बायोलॉजी लूसेंट पीडीएफ है तो यहाँ पे खुल पाया नहीं। वाओ, ये है इसमें, नाइस नाइस नाइस। हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल है, लेकिन सारा एडिट नहीं है इसमें। ओके ठीक है, प्लान सेल तक है बट सारा नहीं है, तो मेरे ख्याल से वी विल हैव टू रीड इट अगेन। दोबारा पढ़ने का कष्ट। मेरी सुबह हो तुम और तुम्हें शाम हो। सिंथेसिस नहीं है, बिहार सेंसस से बायो है, बायो नहीं है। ट्रेड है, फिजिक्स से केमिस्ट्री है, लूसेंट केमिस्ट्री है, लूसेंट जी की एक्सट्रैक्टेड, इनवैलिड पीपी है, एपिथिक्स है, बायो नहीं है भैया, नहीं है, बायो इज नॉट देयर। बायोलुसेंट नहीं है। Morning party chilling till 6 in the morning. Let's get to the sun. But six वाले तो एक्शन करके दिखाए। बायोलॉजी नहीं हो रहा है ना, ओपन ही नहीं हो रहा है। One of the Daniels. How this can be possible? This can not possible. That's the साथ में तुम देखो, इन्होंने नहीं होता टाइम भी है। Focus on one thing at a time. Okay, नहीं हो रहा है, नहीं है मतलब। लूसेंट है ही नहीं।
चल छैया 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 चल छैया 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 LUCENT लूसेंट क्यों नहीं हो रहा? नहीं है बाप, नहीं है। है ही नहीं। तो ये लूसेंट बायो हो गया, ये नहीं हुआ, बाकी नहीं है इधर। बायो तो नहीं है। सर्च में कैसा आ रहा? फिजिक्स है, जीके है, जीके एक्सट्रैक्टेड है, लूसेंट ज्योग्राफी आई है, जीके में देख के दिखाओ एक बार। ज्योग्राफी में तो नहीं होगा, एक्सट्रैक्टेड तो ख़त्म ही हो गया। और जीके देखो, 411 था ना, 511 था, 511 था। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पर दिल कुर्बान। जस्तजू तू ही मेरी जान। बताओ, इतना सारा पढ़ा हुआ गायब हो गया मेरा, दोबारा कैसे करेंगे? इसमें है ही नहीं, नहीं है, नहीं नहीं। ऐ मेरी प्यारी वतन, ऐ मेरी बिछड़ी चमन, तुझ पे दिल कुर्बान है। केमिस्ट्री है ये, नाइस नाइस। केमिस्ट्री है ये, केमिस्ट्री है ये, केमिस्ट्री हो चुका है पूरा। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से पूरा है, पूरा केमिस्ट्री बस। ओके ठीक है, केमिस्ट्री वाले में रखता हूँ। दिस इज ओनली केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कहाँ गया? भाई कुछ ज़्यादा बोल रही है। केमिस्ट्री है ऑलरेडी। अब क्या करना होगा? फिर से मार्क करना पड़ेगा। क्यों चला जाता है? ओनली रीड मार्क्ड एंड ब्लैक ब्रैकेट्स है ही नहीं इसमें, मार्क्ड ही नहीं है तो क्या करें? 60 पेज है भैया, 16 तक हुआ है ना, 60 पेजेस। माय गॉड, सारा एडिटेड था, गायब हो गया मेरा। थोड़ा तो मार्क्ड है शायद बचा हुआ, बाकी उड़ चुका है। भाई 60 पेजेस कब तक होंगे? देखो 14 तो हो चुका है, बोट नहीं करना है। 14 हो चुका है इधर, 15 4 जा 60 तो 45 बच गया। 45 में कुछ हो चुका है इधर भी, तो बहुत कम बच गया, 40 पेज हो जाएगा। चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। Both study of different types of literature report भी therapeutic is called
फादर क्वेश्चन पूछ सकता है, सुन नहीं सकता, बट हाईलाइट कर लो। तेरा फ्रेंड्स पूछा नहीं आज तक, ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गया, botanical word as Ichler classified classification of father इसमें क्या है, प्लांट किंगडम में एल्गी फंजाई, प्लांट किंगडम में एल्गी फंजाई, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, प्लांट विदाउट सीड, क्रिप्टोजेंस, प्लांट विदाउट सीड, सीड bearing, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, plants without seed, okay. जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिसमें ये मोनोकैटिलेटेड, मतलब विदाउट कवर वाला और कवर वाला, उसमें कवर वाले में एक मोनो होता है, एक डाई होता है, ठीक है। देयर इज नो फ्लावर एंड सीड, विदाउट सीड है ना, हाँ, फ्लावर किससे होगा। देयर फॉलोइंग थैलोफाइट इज द लार्जेस्ट, thallopod is the largest group of the body of the plant. In this group is thallus. Like plant are not differentiated into roots, stem, and leaves. So thallophytes में क्या है? No differentiation. No differentiation. There is no conducting tissue that's divided into algae and fungi. So thallophyte is algae and fungi. Okay. Thallophyte is algae and fungi. Okay. मत करो मार्क, बस समझ जाओ कि थैलोफाइट है, एल्गी एंड फंजाई। उसके बाद क्या है, देयर इज नो कनेक्टिंग टिश्यू, ये वो हो गया। एल्गी, द स्टडी ऑफ एल्गी इज साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन देखना आपको, स्टडी ऑफ एल्गी इज साइकोलॉजी। इसके बाद क्या है, द एल्गी नॉर्मली हैव क्लोरोफिल एंड autotropic mode of nutrition, so they have chlorophyll. Autotropic mode of nutrition, its body is thallus liver as a food, polyphenol reaction, as a mature nostoc, in making medicine chlorophyll. It is made of film in research for chlorophyll as an mode of fusion in the tank of aircraft. Space algae. Study of fungi is called mycology. Fungi is mycology. Okay. Mycology, fungi is chlorophyll less. So fungi में chlorophyll नहीं होता. Chlorophyll यहाँ क्वेश्चन बना सकती हो तुम चाहो तो। सेंट्रल कैरिटेशन थैलोफाइट, accumulated food in fungi remain called glycogen.
cell wall is made of fungi have cell wall and it is made up of chitin. Chitin, okay, example हो गया. Fungi may create serious disease in plant. Most damage is caused by rust and smut. Main fungal disease in the plants are ये rust of the wheat, ठीक है. उसके बाद क्या है, रेड रॉट ऑफ सुगर केन, टीका डिजीज हो गया, ड्राई फाइटर. तुम्हारे लिए ये सहूलियत तो ऐसे रख लो. अरे मैं सोच से हूँ. ठीक है. This is the first group of land plants. Bryophyta is the first group of land plants. So ये सब क्या थे? Thallophyte. The body of the plants and plant not differentiated. This is the largest group of plant kingdom, and the body of the plant is in this group. Hi. Okay, it's break time, I guess. 7 p.m. Hi, hello. What's your name? Wait. अरे यूट्यूब वाले नेम सब इतने यूनिक होते हैं कि पढ़ा भी नहीं जाता मैं. Okay, I think I should just stand up a little bit. Hi, hello. कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? मैं तो बिहार से हूँ. What's your name? You're from Rajasthan? Okay. पधारो हमारे लाइव. What do you do? And what's your name? क्या करते हो? स्टडी. यस. फिलहाल तो स्टडी ही कर रही हूँ. यही ज़िंदगी है मेरी अभी. I think I should put it here. आप क्या करते हो? What do you do? You're a student or what? No, not for semesters. I'm studying for civil services exam. I am a UPSC aspirant, but right now I'm preparing for my state pieces. Okay, so you're doing BSc? Okay, great. BSc from Rajasthan itself? Or somewhere else? परवल. क्या बताओ? क्या बताओ? अच्छा, और बताओ लिखा था क्या? इट केम पर बताओ.
आई डोंट नो क्या लिखा है। PR बताओ भाई। आई एम ऑलरेडी ओवर थिंकर, मेरे को और लग रहा है क्या है। यार मेरा ब्रेक टाइम है अभी 6 मिनट और। किसकी तैयारी कर रहे हो? आई एम प्रिपेयरिंग, लाइक आई एम UPSC एस्पिरेंट। आई वॉज इन दिल्ली। फिलहाल मैं अपने घर पे हूँ एंड आई एम स्टडिंग फॉर BPSC एग्ज़ाम। अभी जो मेरा एक महीने में है, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। बट ओवरऑल आई एम अ UPSC एस्पिरेंट। हो, अभी बस 1 घंटे हुए हैं हमारे पढ़ाई, एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी एंड एट 10। यस, UPSC। बिहार से होके UPSC नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? जस्ट किडिंग, मेरे घर में सब UPSC नहीं कर रहे। आई एम डूइंग दिस। I think I should walk a little. What's your name? आपने नाम नहीं बताया। देखो मैं कुछ उल्टा सीधा ना पढ़ दूँ। वो बुक दिखाना, BPSC की। अच्छा, बुक दिखा। ओके, यू आर आल्सो एस्पिरेंट। BPSC करनी है दिस। अरे ये एक्चुअली प्रीवियस क्वेश्चन बुक है, तो दिस इज अ प्रीवियस क्वेश्चन का कंपाइलेशन। सब्जेक्ट वाइज है ये। मेरी बुक थोड़ी चटनी बन जाती है, तो दिस इज इंडेक्स जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और क्वेश्चंस हैं। वैसे काम करवा रहे हो? एक राजस्थान का बंदा BPSC क्यों देख रहा है? ज़रूर वो मेरे से काम करवाना चाहता है। यार अभी मेरे को 2 मिनट खड़े रहना है ताकि मेरा पैर दर्द ना हो। सो दिस इज ब्रेक टाइम। हाँ, उसके सिलेबस पे UPSC जैसे ही है, बट क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, क्वेश्चन के डेप्थ अलग होते हैं। बाकी पढ़ना वही है, GS ही पढ़ना है। जनरल साइंस। सुहाना सफर नेम जान के क्या करोगे? अरे नेम इज लाइक इंट्रोडक्शन ना, तो नेम इज द फर्स्ट थिंग वी आस्क अबाउट एनीवन ना, तो इसलिए पूछा। बाकी अगर आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं। टेन मिनट्स ब्रेक बहुत ज़्यादा होता है क्या? हाँ, शायद आपका ये पहला सेशन हो तो ज़्यादा होता है।
अच्छा ठीक है, आई एम एंडिंग माई ब्रेक 2 मिनट पहले। रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन। क्योंकि मेरा पढ़ने का मन है अभी, बाद में ब्रेक ले लेते हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। बहुत सारे पेज कंप्लीट करना है भैया। कीवा विकार, ओके, इट्स अ वेरी यूनिक नेम टू मी, थैंक यू बताने का कष्ट किया। ओके 17 I should change this break time. ब्रेक टाइम 8 PM। यार यहाँ ऑडियो से टाइपिंग नहीं हो रही है। ब्रेक टाइम 8 PM। My name is शिवानी। ये क्यों नहीं हो रहा? अरे ये हो क्यों नहीं रहा? ये यही प्यार है मेरी शकल पे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं यार। संजय creates serious disease in plants. Most damage is caused by rustles, but main fungal diseases in the plants are, ये तो हो गया था bryophyta. Bryophyta is the first group of land plants. First group of land plants in this division after the bryophyta, there is lack of xylem and phloem tissue. Bryophyta में lack होता है. Plant body may be thallus-like and leafy erect structure as in moss. Okay. They lack true roots, stem, and this community is called amphibian category of plant kingdom. Thallus-like. They lack true roots and most namely, phagm is capable of soaking water and retaining it, therefore continuously also its protect. Mostly found by study and the body of the plants are differentiated into roots, stem and leaves. Stem remains as normal and reproduction occurs. The spores phase is short-lived. The diploid zygote develops into an embryo. Plant of this community have conducting tissue. The xylem does not contain vessel and full resemblance ferns in the झोला. Ferns are the example of this ना. Example में ferns आ जाएगा, झोला आ जाएगा. A very famous name kind of. Okay. Phanerogamous or floral plants.
कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। अच्छा ठीक है, इसी में आ जाता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। प्लांट्स are formed trees versus plant body are differentiated into root, stem, and leaves. ठीक है, the plant the type of developed and the pollination takes place in the longest plant kingdom, the longest। अरे यार बताओ, लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है बीपीएससी। अब मेरे को समझ आ गया, ये क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन में। द लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम। मेरे को लग रहा था कहाँ से क्वेश्चन आया है भैया। रेडवुड ऑफ ऑल्सो नोन एज रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, ये क्वेश्चन था बीपीएससी में। एंड आई थिंक ये लूसेंट के अलावा कहीं नहीं मिलने वाला, मतलब नॉर्मल सोर्सेज में। ठीक है, हाइट हाइट इज 120 मीटर। अच्छा ठीक है, ये भी नोट कर लो। हाइट इज 120 मीटर। इज कॉल्ड रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। द स्मॉलेस्ट प्लांट इज जैमी। अब बताओ ये क्यों नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। जैमिया पिचमिया वॉटर। ठीक है, लिविंग फॉसिल्स ऐसे इधर फॉसिल्स है। तो ये हो गया। इज ऑल्सो कॉल्ड मेडन हेयर ट्री। व्हाट इज कॉल्ड? ठीक है, ओव्यूल्स एंड there is a plant is the largest plant kingdom है। अजीब सा है, फिर भी चलो मार्क कर लेते। द pollen grain of finest are so much in number that latter turns into sulfur showers. Okay, this is something unique. Importance of gymnosperm as a food. Sago is made by extracting the juice from the stem. Therefore, the wood. हाँ 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 हाँ। Was made by extracting juice from the stem. Uh, cycles, therefore, cycles is sack palm, making wood of the pine को जो कि largest and deodar is used for making furniture. Pepper oil, we get tarpon oil from the trees of pine. Pepper oil from the trees of pine, citrus oil from deodar.
is one cotyledon is in seed. Example में हो जाएगा those plants which are only one cotyledon. जैसे example में nut, coconut में one है. हाँ, और examples तो याद कर लो. Garlic, onion, okay, nut, coconut, wheat भी है. wheat मतलब ये मतलब दनाई है. wheat भी है. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं. क्वेश्चन कर लेना यहाँ पे, ठीक है. और उसके बाद बीन्स, बम्बू, सुगरकेन हो गया. उसके बाद राइस हो गया. ओके, बैम्बू ये सीड वाला. बैम्बू में सीड भी होता है. भैया नहीं पता था ये. बैम्बू, सुगरकेन, राइस. राइस तो है, बाजरा. यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर. आंसर इट इज मस्टर्ड इज डाई. बताओ, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे. मस्टर्ड इज डाई. लेडी फिंगर इज डाई, ये तो पता है. अच्छा, मस्टर्ड जो निकलता है उसमें से वो दो होता है ना, जो दोनों तरफ से बांट सकते एक तरीके. ठीक है, बबूल हो गया, ये हो गया, सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड, डायमंड. तो जो टू इन इट्स सीड. ओके, मेलन, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, एप्पल. ठीक है. स्टडी ये तो हो जाए वायरोलॉजी. वायरस वॉज डिस्कवर्ड बाय in the year whatever during the test of this is on tobacco. Okay, now in nature there are ultra microscopic particles known as virus. Virus is connecting it is both living and non-living, so it is a connecting link between living and characteristic of viruses. They become active inside living cells. If it replicates and reproduce rapidly, active inside a living cell. They become active inside a living cell. So, न्यूक्लिक एसिड. तो बाहर में क्या करेंगे? बाहर में तो एक्टिव रहेंगे. नहीं. न्यूक्लिक एसिड replicate themselves as they reproduce they cause disease like bacteria. According to parasitic nature, virus is of three types. Plant virus, RNA is present. Animal virus, DNA or sometimes RNA. Bacteriophage, they depend on only on bacteria. तो ये हो गया. They kill the bacteria. DNA is found in them. T2. In man, virus causes like mumps, chicken pox. तो ये वायरल वाला कर ले ना. यहाँ क्वेश्चन करना पड़ेगा. Bacteriophagous. The bacteriophagous are those viruses which infect the bacteria. Tobacco, mosquito virus. ये bacteriophagous है. Those viruses whose RNA substance is found as genetic material are called retrovirus.
those viruses is called retrovirus. ठीक है. This virus was discovered by Anthony and Leeuwenhoek. Discovered by Anthony and Leeuwenhoek. Leeuwenhoek is called father of bacteriology. In the year 1829, they called bacteria. The year 43 discovered the bacteria of tuberculosis, that is the vaccine of rabies. ये एक famous name है, तो we can mark it. And pasteurization of milk. Other bases of stable bacteria, bacillus, round or coccus. These are round and small bacteria. Some species Clostridium live freely in the soil and fix nitrogen. तो ये कौन कौन सा है? Bacterial Anabena, भी है, और the species of Rhizobium क्या है? The species of Rhizobium and converting atmospheric nitrogen. Converting which nitrogen, which kind of nitrogen? So atmospheric nitrogen. ठीक है, to preserve the milk for many, since it's a term that is low temperature holding milk required 90% high temperature for 15 seconds. Another does separation of air and bacteria tanning of leather, because syrup is kept in salt or in dense liquid of sugar, so bacteria tan bacteria after destroy their food because it is a toxic poison and can be preserved for a long time. अच्छा, in the cold storage objects are kept at low temperature. लो टेम्परेचर तो है, लेकिन अब कितने टेम्परेचर पे ये क्यों पूछेगा? Microbes smallest known prokaryotic cells causing pleuropneumonia और PPP. ठीक है. आई थिंक प्लूरोनमोनिया. ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि प्लूरोनमोनिया किस कहाँ से होता है, कैसे होता है. Like plus morphology, the study of forms and features of different plants, like rose stem. different parts के studies को morphology, study of different parts of plants. Root is a descending part of the plant which develops from radical roots centrally, grow in soil away from light. Roots are a taproot and conical like carrot. हाँ, carrot is a root. ये हो गया turnip. अलग अलग तरीके. This is the part of plant which grows toward light. It develops from plumule. Roots develop from stem, develop from modification of stem, are as under tuber like potato,
अंडरग्राउंड में ना, अंडरग्राउंड स्टेम का टाइप है एक तरीके से। ये इम्पोर्टेंट है एक तरीके। ट्यूबर लाइक पोटैटो, ये इम्पोर्टेंट है। वेल, ये किस टाइप का रूट है, ये स्टेम है, वो पूछा जा सकता है। इन फ्लावर how do this and unit of stamen, there is one or more stamen, one or more भी हो सकता है। pollen grain are found in anther, stamen होगा, one or more हो सकता है। pollen grain is found in anther, ये तो पता है। और gymno, so unit is carpel, unit is carpel, there are 3 parts of carpel, 3 parts of carpel, ovary style stigma, but it's after maturation of anther. Maturation of anther, the process of reaching pollination to stigma is called pollination. Stigma is like a stick जो रहता है। After, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन में आया था। After maturation of anther, the process of reaching pollen grain to stigma is called pollination. The stigma style and ovary, not ovary, ovary is not fertilized. पॉलिनेशन की बात हो रही है, फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। To stigma, not ovary. Stigma style and ovary, ठीक है। पॉलिनेशन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ ओविडक्ट में ही पहुंच गया तो बहुत है। pollen tube reaches the fertilization में, अब fertilization में देखो। pollen tube reaches the egg cell after entering into pollen tube reaches the egg cell after entering into ovule through a pore called micropyle. After that, a male nucleus fused with the so-called fertilization is called fertilized egg is called zygote. सब जानते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब fertilization triple, the fertilization triple fusion whereas in other category of plant it is double fusion। एंजियोस्पर्म जिसमें कि सीड enclosed रहता है, इसमें ट्रिपल फ्यूजन। ओके, in some plants fruits are developed from ovary without fertilization. This type of fruit is called, अच्छा ये बात है।
Normally this type of fruits are seedless. But this is not compulsion, मतलब सीड हो भी सकता है. Banana, orange. Some fruits are developed from ovary without fertilization. So orange, grapes, pineapple, apple. नहीं, वो तो एप्पल में हो जाएगा जो रिपेंड ओवरी का. Formation of fruits. Fruit is mature or pin ovary developed after fertilization. Formation of fruit takes place from ovary. Fruits are divided into three types: simple fruit, composite fruits. In the development of some fruit takes part. This type of fruits are called false fruit. So there's false fruit. Example. This is important. ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है. So this is something important. ये भी रखना हो. Okay, the group of cells of similar origin, structure and function is called tissue. The group of cells of similar origin, structure and function is called similar cells make tissues. वही वाला ना. It's still थोड़ा confusing. The group of similar ये तो क्या? Apical, meristematic or permanent, apical, lateral, intercalary, simple, complex, joint, permanent, so xylem and phloem. Growing results of plants are called meristem. This means to have capability of self-division. अच्छा ठीक है. क्यों परमानेंट में नहीं होता? नहीं, परमानेंट में कैसे होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू capability of cell division. Daughter cell are formed after it grows and is with the different parts of the plant. This will continue till the lifespan of the plant. Specific features of meristem tissue are multi-sided. The wall are thin and cytoplasm is homogeneous. Obviously homogeneous होगा तभी वो कुछ भी बना सकता है ना. Single large. The lack of intercellular spaces between the cells. Lack of intercellular spaces. ठीक है, इतना नहीं पूछेगा. चलो. Apical measure this tissues are formed in the root and stem. Apex. Apical में क्या होगा? Root and stem में. ठीक है. Initial growth, especially length of the length के लिए ये लेंथ के इनिशियल ग्रोथ और लेंथ में हेल्प करता है एक तरीके से. लेटरल मेरिस्टेम ड्यू टू द डिवीजन इन दिस टिश्यूज
growth in the growth of the stem and the root stem है increase the width. So lateral है तो नाम से पता चला कि वो width बढ़ाएगा. और intercalary they are located at the base of internode which is divided by the upcoming the incoming of the permanent tissue divided by the incoming of the permanent in the center. Plant increase its length by activity of this. Its importance is for those plants whose apex part are eaten. अच्छा, तो ये है, ये भी लेंथ बढ़ाने में काम करता है. और द इम्पोर्टेंस इज फॉर दिस पार्ट whose apex to a vegetarian animal uh, after being eaten apex part of like grass. Permanent tissue. So permanent tissue is made of those mature tissues that have lost their capacity of cell division. Okay. Retained in different forms. Various of these cells can be alive or dead. So this cells can be alive or dead. ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है परमानेंट टिश्यू पे. सिंपल टिश्यू permanent tissue is made up of similar types of cells. Simple complex tissue with permanent tissue is made up of one or more types of cells. Xylem, this is usually called wood. It is a conductive tissue with conduction of water and minerals. So यहाँ पे क्या करना है? Xylem is for water and minerals and mechanical consistency के लिए. Okay, and phloem is this is conducting tissue. The determination of age of the plant is done by counting annual rings of xylem tissue. Okay, so annual rings. The method is called dendro method called phloem conducting tissue and the main function in the food prepared to different parts of the plant. Photosynthesis in the presence of water, light, chlorophyll and carbon dioxide. The ठीक है. Carbon dioxide, water and sun are renewable direct to plant and takes from atmosphere where aquatic plants use carbon dioxide mixed in water. Water enters into the cell of the leaves through osmosis. Into the cell. So water enters into the cells of leaves through osmosis and the leaves में osmosis करने से through diffusion carbon dioxide through diffusion are released during respiration. Water necessary for photosynthesis is absorbed by the roots and the oxygen produced during the photosynthesis due to
Photolysis of water. Water necessary for photosynthesis observed by the roots and oxygen produced during photosynthesis of water. हाँ तो हाइड्रो वाटर से ही जो टूट के जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं पे है. ग्रीन प्लांट तो क्लोरोफ्लोर photoreceptor molecule which trap the solar energy. Oh, okay. Then different type of chlorophyll molecule like A, B, C, D. Chlorophyll is most common and are found in a plant. Chlorophyll A and B. There is an atom of magnesium. Magnesium in the center of chlorophyll. So magnesium is there. ये भी question है. Direct questions मिल रहे हैं. Chlorophyll absorb the violet, blue and भाई सारे question ही हैं. Each line is a question. The weak the rate of photosynthesis maximum in red light. Again a question. Maximum in a violet light. The process of photosynthesis is a reaction of oxidation, and in the process of photosynthesis is a reaction of oxidation and reduction. The एक साथ होता है oxidation of water takes place. Oxidation of water takes place, forming oxygen, and reduction of carbon dioxide takes place, forming glucose. ठीक है. Oxidation of what? Water. Forming oxygen and reduction of carbon dioxide. रिडक्शन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मिंग ग्लूकोज. ठीक है. द स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द स्टेजेस ऑफ a photochemical reaction और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. तो दोनों स्टेजेस. The reaction is completed in grana. It is called Hill reaction. यहाँ से भी क्वेश्चन निकल सकता है. In this process, breakdown of water takes place, and hydrogen ion and electron is formed. तो breakdown क्या होता है? breakdown of water होता है यहाँ पे. For photolysis of water, energy is received from light. At the end of this ATP is formed, and ये वो ठीक है. लाइट रिएक्शन की बात हो रही है ना, तो ATP is formed. Okay, डार्क रिएक्शन में क्या है? This reaction takes place in stroma. Of course, this reaction ये रिडक्शन हो गया यहाँ पे. अच्छा. This sugar is formed. It is called Calvin-Menstration cycle. Following 5 hormones are found in plant. hormones में क्या क्या है? अच्छा, टाइम अप हो चुका है. Following 5 hormones are found in plants. Auxins हो गया. Auxins are discovered by Darwin in the year 1880. This is hormone which control the growth of plants. तो इसमें growth की बात होगी, तो formation of apex part की बात होगी. It prevents the separation of it destroys the straws.
save the crop from falling. Prevent separation of leaves. Japanese Showa in year 1926, it turns the dwarf plant into long plants. It has been creating flowering. The dwarf plants को long plant में कैसे बनाएगा? Length के लिए तो ऑक्सीजन है. It's not for length. It has been creating flowering. Flowering के लिए ये help करता है. It has been breaking the dormancy of plant. It motivates the seed to be sprout. ठीक है, seed sprouting के लिए भी. This activity of clumping in wooden where large size roots and flowers can be produced by its scattering. Large size. Okay. Cytokine, it was discovered by Judd in the year 19. Let them it naturally work in coordination with auxins. Have cell division और development में काम करेगा in the presence of auxins, and it has in the breaking of dormancy of seeds. Again, it is helpful in making RNA and protein. ये हो गया ABA. Against growth, keeps the certain part at dormant, so it is unwanted एक तरीके से. It plays a role in separation of leaves, delays in flowering of long day plant. What is long day plant? Ethylene is the only hormone that is found in gaseous form. Ripening के लिए increase the number of female flowers, motivates the separation of flowers through. ठीक है, सारे highlights हो रहे भैया. Florigen, it is formed in leaves but help in blooming flowers. Formed in leaves. अच्छा. Therefore इसका flowering hormone. ठीक है, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से भी. Traumatic. This is a type of dicarboxylic acid is formed in injured cell by which the injury of the plant is healed. तो नाम है traumatic but injury plant को heal करता है. Wow, nice. Plant disease. Viral disease, mosaic disease of tobacco. In the stage leaves get shrinked and become small. The chlorophyll leaves get destroyed. The factor of this disease tobacco. ये वो the viral disease हो गया. Control affected plant should be burnt. तो ये होगा यार viral disease. Viral disease. Control affected plants should be burnt. कुछ भी हो सकता है. The factor of this disease is bunchy top of banana. This is caused by banana virus. In this, this plant become dwarf, and all leaves of the get accumulated like rows on branch. Top banana. ठीक है. Bunchy top banana is a viral disease in plants, bacterial one.
Wilt of potato. Ring disease because brown ring is formed. Brown ring formed. And xylem. The factor is citrus. ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन सिट्रस ये क्या है क्या है क्या है ये बैक्टीरियल ब्लीट ऑफ राइस तंदू डिजीज फंगल कॉजेज फंजाई पेज हाइट डिक्रीज 34 ओके some important facts regarding botany भैया कहाँ तक पहुँचे अपन 24 23 हुआ है बस अभी बहुत है अभी बाकी बहुत नहीं है 5 21 February 28 बाकी है still बहुत है इसलिए भरा हुआ था ना फिर 2 मिनट होल्ड कर लो बात है अभी है ना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग बॉटनी बस इतना ही है उसके बाद इकोलॉजी स्टार्ट होगा ठीक है लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म इक्लिप्टस हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है ये आया भी था क्वेश्चन बीपीएससी में तो यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन का मार्क लगा दो एक बार मैं क्यों आता है क्या है ये फायर ऑफ द फॉरेस्ट lightest chroma heaviest and hard smallest gymnosperm Jamia ठीक है the plant with the least number of chromosome Hipla okay largest number of chromosome इतना नहीं ज़रूरी है लाई मोर largest seed egg what is seed egg I don't know smallest angiosperm parasite okay I'm leaving this question गुलाबी आँखें जब तेरी देखे सराबी धुन धुन धुन
आंखें जब तेरी जब तेरी आंखें सराहे बड़े डराता डरते रही मुझको तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे बस
Okay, 1 minute left. I was just trying कि मैसेज कैसे डिलीट होता है. Okay. 42 seconds left. Coming. 48%. ठीक है. Okay. Okay, we'll start our next session. 8:11 हो चुके हैं. I think I should edit here. क्या है यहाँ पे? ब्रेक टाइम. ब्रेक टाइम 9 PM. ठीक है ना? Is it looking too much occupied or what? Okay, let's start. Fruit like tennis ball, coffee, giving plant coffee Arabia, caffeine, condense in it, caffeine. Study of interrelationship between living organisms and their environment. Various population of living in a different place. Definite place is called a biotic ecosystem or ecological system. What was coined by an ecosystem is made up of two components: biotic component level
एनाबायोटिक पता है, बायोटिक components are divided in three parts: producer, consumers, and decomposers. Producer those components that make their own food. Consumers पता है, ये क्वेश्चन भी आया था BPSC एग्जाम में. Primary consumer in this category, those organisms are included that lives on a green plants or some, ठीक है. Secondary मतलब जो carnivorous हो गए, और tertiary जो उनको खा रहे हैं. Decomposers, we all know this, mainly fungi and bacteria, ठीक है. Abiotic, बस ये दिमाग में रखना और कुछ नहीं. Abiotic components are as follows: carbonic substances, non-carbonic, climatic factor, और इसका components are as follows. Abiotic components, okay, मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, बस बात खत्म. फूड चेन, ठीक है. Nitrogen cycle, nitrogen is a process in which free atmospheric nitrogen is converted by living organisms, ठीक है. Ammonification, formation of ammonia from organic compounds like protein and nucleic acid by microorganism. Nitrification, converted into nitrates. Ammonia is converted into nitrates. Ammonification is done by microorganism. Formation of ammonia from organic compounds. ठीक है, commonly known fact है तो चलेगा. Nitrates were converted into nitrates and ammonia is converted into nitrates and nitrates. What is this? 2 बार रिपीट क्यों कर दिया? मेरा गला खराब है. Denitrification, it is the process of converting fixed nitrogen like nitrates and nitrites. And ammonia into free nitrogen. Denitrifying bacteria, ये important हो सकता है. Okay. Pollution, unwanted changes in the chemical and process that are dangerous to human. The type of pollution is, ठीक है. Nuclear pollution is also pollution. Air pollution carbon monoxide, dioxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide. So H2S is also फिर भी आपकी क्या नहीं आ रहा? व्यू नहीं आ रहे? अच्छा, व्यूज नहीं सर, मैं यहाँ व्यूज के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ अपने डिसिप्लिन के लिए बैठी हूँ. Unwanted changes in the chemical and physical feature of air, water, and land that are dangerous to human and other organisms, their life condition, industrial. नहीं, एक्चुअली मेरा वो भी है ना कि मतलब एक न्यू आईडी है तो इसका रीच नहीं देते ना, इसलिए भी. बाकी मेरा तो क्या बताओगे. अनवांटेड चेंजेस इन द केमिकल एंड फिजिकल फीचर्स कहाँ थे यार? एयर पॉल्यूशन तो हो चुका था. चलो, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, fluoride, smoke, particles of smoke, aerosols. Aerosols, sulfur dioxide, sulfur trioxide, ये भी है.
डाइऑक्साइड का भी है, ठीक है। रिएक्ट विद एनवायरमेंटल वाटर and create sulfuric acid and nitric acid. This is research acid rain. On 3rd December 1984, the incidence of leakage of methyl, अच्छा वो बाल्क गैस ट्रेजेडी वाला ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जस्ट मार्क इट हियर। Water pollution. Mixing of unwanted substances with water is called water pollution. Very basic. Sources of water pollution. The water pollution takes place mainly with the mixing of carbonate, sulfate of magnesium and potassium, ammonium and carbon monoxide. ठीक है। Mixing of carbonate, sulfate of magnesium, potassium. See, water pollution due to the mixing of heavy sound pollution. Okay, sources of sound with the source of sound pollution is lot. ठीक है। Soil pollution is distorted. Sources of soil pollution is acid rain, water from mines, excessive use of fertilizers, etc. Okay, nuclear pollution is pollution created by radioactive rays. Radioactive rays. Pollution from the rays which are used in treatment. Pollution can be source. Treatment pollution created from fuels and used in atomic reactors, pollution created from the use of nuclear weapons, and pollution created remaining substances coming out of atomic powerhouse. Pollution biotic community. Population biotic community. Population is a group of the same species occupying the same area at a given time. Huh? Same species occupying the same area at a given time. Okay. Population, total number of individuals present in per unit area. Natality, increase in the number of individuals in a given population by birth. This is something new to me. Natality is number of individual बढ़ जाएगा by birth in a given population, ठीक है। Mortality, number of individual removed. Okay, मतलब इंक्रीज होना तो natality और वो हटना तो mortality, ठीक है। From the population due to death. Under a given environmental condition at a given time is called mortality. Biotic potential, it refers the maximum साइज वाला है क्या यहाँ पे? Biotic potential, it refers the maximum capacity of inherent of an organism to reproduce. Maximum capacity of inherent of an organism to reproduce. This is called biotic potential. Maximum capacity of inherent. Environmental resistance, environmental factor which put a check on the growth of population. This is called mutualism. It is a functional association between two different species in which both of the species are benefited. So this is mutualism, mutual friendship. Both the species should be benefited. Commensalism. What is this? It is an association between two individuals of two different species in which one is benefited और वन इज़ नॉट अफेक्टेड. ना बेनिफिट होगा ना इफेक्ट होगा, ठीक है। benefited and neither nor affected. Okay.
population explosion, the dramatic increase in demographic transition. If the birth rate is equal to the death rate, it results in zero population growth, which is demographic transition. Psychosis. Demographic transition. If the birth rate in the dramatic increase हो गया, if the birth rate is equal to the death rate, it is zero population growth. So zero population growth is demographic transition. Psychosis. It is a mild form of mental illness where the patient shows prolonged emotional reaction. It is a mild form of mental illness. Emotional reaction. Drug abuse तो सबको पता है. When drugs are taken for a purpose other than the normal clinical use, is called drug abuse. Zoology तो पता है. Scientific study of structure, form, distribution of animals के बारे में. It's like zoo. Classification of animal kingdom. Unicellular, multicellular. Unicellular are kept in a single phylum, Protozoa, whereas multicellular are divided into 9. Classification of animal according to Storer and phylum Protozoa, phylum Porifera, Coelenterata. अरे okay. Unicellular animals are kept in a single phylum Protozoa, whereas multicellular animals are divided into multicellular animals are divided into 9 phylums. Okay, so phylum is a group. बचपन में मेरा ये फेवरेट चैप्टर था, मतलब ग्लैंड्स के बाद एंडोक्राइन. Okay, so phylum Protozoas. Protozoa unicellular है. Its parasite only ones are both types of parasites भी होते हैं और ये भी होते हैं. मतलब प्रोटोजोआ ऐसा नहीं कि बस पैरासाइट्स हो, या तो ऐसा हो सकता है कि वो अनअफेक्टेड है और एक पैरासाइट भी हो सकता है. All the metabolic activity, eating, digestion, respiration, excretion, all they takes place in unicellular body. Respiration and excretion takes place by diffusion. Respiration and excretion takes place by diffusion in phylum. In phylum Protozoa, मतलब यूनिसेलुलर वाले में. अमीबा, यूग्लेना. भाई बहुत ज़्यादा डिटेल हो रहा है. फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा. इसको
स्कूल का है, स्कूल टाइम याद आ गया। पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथस, कुछ ऐसा था ना। हाँ। All animals of this group are found in marine water and bear pores. These are multicellular animals, but remove it here. अरे यार, अरे यार, अरे यार, क्या हो रहा है? अजीब बात है, खत्म ही हो गया। So they have pores. These are multicellular animals, but cells do not. These are multicellular animals, but cells do not make regular tissue. Numerous pores and also found in the body. Body wall skeleton is made up of minute calcareous or silicon spaghetti sponge wala. In which cylinders present animals are aquatic and plastic. Um, Around the mouth, some thread-like structure. Example, hydra jellyfish. मतलब अराउंड माउथ क्या होगा? सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा और aquatic and डिप्लोप्लास्टिक। देखना पड़ेगा क्या है ये। फाइलम फ्लैटवर्म, टेपवर्म मतलब ल्यूकवर्म, triploblastic and no body cavity. Alimentary canal with a single opening. No skeleton. No skeleton is there, and respiratory organ circulatory system is not there. मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम्स नहीं है बॉडी में। Unsegmented worm. Bilaterally symmetrical. Nervous system developed. नहीं, ये सब इतना नहीं डिटेल आएगा। It's for mainly in the child. अच्छा, chain of neurons. This is body is long
earthworm kind of leeches, and therefore they are effort in taking a question हो सकता है. Phylum Arthropoda. Jointed leg. Body is divided into three parts. Body divided into three parts like cockroach kind of. Jointed leg. Circulatory system is open type. Body cavities are called. Example cockroach. Mainly unisex inside the body. Belly है ना. There are 6 feet and 4 wings. 6 feet and 4 wings in the third chapter in cockroach heart. Oh my god. And it's a social animal which reflect liver disease. Terminate is also someone which lives in colony. Phyllis. Oh, okay. Phylum. Mollusca. Main features softer bodies. Body is soft, divided into head and muscular foot. Mantle is always present in it, which secretes the heart cancerous cell. Alimentary canal is where the respiration takes place through gas and phyllomalacus. Blood is the colorless. Kidneys होते हैं इसके. Okay, octopus का. Blood is colorless. Okay. Excretion takes place through kidneys. Phylum Echinodermata. Octopus, devilfish. Other name is invoke. Octopus, devilfish. Good. Sea rabbit. ये क्वेश्चन बन सकता है. देखो क्या होता है. Glacier. Phylum Echinodermata main feature spiny skin. Echinodermata spiny skin. अच्छा ये था ना क्वेश्चन. All marine water-vascular system is present. Tube like locomotive. Sensation organ. Brain is not developed in nervous system. There is a special capacity of regeneration. All the invisible groups of marine water vascular system is present. There is tube. Brain is not developed in nervous system. There is a special capacity of regeneration. Regenerate कर सकते हैं ऐसा. Echinodermatas can regenerate. Okay, like starfish हो गया. Sea brittle star. The work of the Aristotelian is to chew the food. It is found in अच्छा phylum Chordata. Phylum Chordata means
chord is present in it. All the chordata are triploblastic, coilomate and bilaterally symmetrical. There are hollow tubular nerve, cone and beard. Are other features of chordates. Okay. According to classification, there are two subphyla in chordata. What is chordata? It's present in chordata is triploblastic. Appeared with other features of chordata. According to classification, there are two subchordata. The main group of phylum chordata. Rare chordata pieces. Main feature aquatic life, all cold-blooded. Reptilia, main feature crawling animal. Reptilia land diploid, cold-blooded. Again ये भी लोग cold-blooded terrestrial और aquatic दोनों हो सकते हैं. It contains two of limbs. Skeleton is completely flexible. Respiration takes place through lungs. Respiration lungs से होगा. Egg are covered with cell made up of calcium carbonate. Mesozoic के रहते हैं. Cobra is on its neck, which makes nest. Heloderma is the only poisonous. There's a sea snake which is called the world's most poisonous snake. Okay. These questions are possible. Apes का क्या है? Main feature. I know थोड़ा ना तो कौन सा बट कुछ ही सजेस्ट करके बताती हूँ. Trying to tend the pagal जैसा होगा तो बस इस पे कर लेंगे ब्रेक. Apes main feature. Apes का warm-blooded, okay, and with a flight adaptation. Its forefoot modified into wings to fly. Boat-shaped body is representation or respiratory
Those birds have noted. Birds have noted big help in feeding. कौन कॉल कर रहे हैं?
अटेंडेंस and muscle.
let's about transportation. The first Nepal, the listed food, hormones, street product, etc. It's 9. Okay. I hope कुछ भी उल्टा सीधा ना हो. Hi, who's there? भाई 3 घंटे हो गए, मेरे पीठ में दर्द है. आई थिंक आई शुड एंड दिस लाइव क्योंकि कल फिर से
अजीब सी उलझन है, लग रहा है कि नहीं कर रहा। I think I should go and have my dinner. क्योंकि थकान भी हो रही है और प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी अगर भूख लगी है तो। What to do यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। Okay, decided. I'm going to have my dinner and let's cancel this 9 to 10 वाला। ये 3 घंटे हो चुके हैं और अब मेरे को लग गई है भूख। So I have to go for dinner. जल्दी जल्दी से इसको रैप अप करते हैं और फिर डिनर की तरफ चलते हैं अब, बिकॉज पेट में गुरगुर मतलब दिमाग नहीं चलना। तू मेरा हमदर्द, ये सब तो था है ना, ये सब था पहले से। यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, बोटनी से। ओके, तो 19-20 पेज रह गए हमारे। मे वी विल डू दिस आफ्टर डिनर और शायद कल, आई एम नॉट श्योर। ओके, ये सारे मैंने किए हुए चैप्टर्स थे, बट मेरा जो एडिट है वो गायब हो चुका है, तो मेरे को दोबारा करना पड़ रहा है, बट दैट्स ओके, रिविजन भी हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर चलते हैं लंच के लिए। फिर चलते हैं डिनर के लिए। ओके, 9:10 I should leave this. I'm tired little bit, क्योंकि शाम को कुछ खाया नहीं था, तो कल से शाम को खा के बैठना है। ओके बाय।
Thank you to those who joined, and thank you so much. Bye bye. Good night.